Hello, my dear students. How are you all doing? Me, I'm doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, this is your Pritam sir once again, and you are watching Pritam's English Mantra. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜରେ ଆମେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇନଭିଟେସନ୍ 1 ବୁକ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପୋଲିଓ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ which can lead to paralysis or even death. At one time, it was one of the most dreaded childhood illness of the 20th century. तामाने पोलियो होची गोटे बहुत सीरियस डिजीज एथि पई एटा सीरियस डिजीज जे ए डिजीज रे थरे अफेक्ट होवा परे that can lead to paralysis or even death माने गोटे लोक इधर paralysis हो जाए किमा तार मृत्यु हो जाए एवं one time it was one of the most dreaded childhood illness of the 20th century एकदा ए जो डिजीज बर्तमान तो गोटे मामूली पोलियो कहले लोक हसिबे जे पोलियो सेमती किछि नाही किंतु at one time it was one of the most dreaded childhood illness of the 20th century. The disease caused severe illness in thousands of children each year before the vaccine was introduced in 1955. Thanks to the introduction and widespread use of the vaccine, the number of cases has decreased significantly. तामाने ये जो disease, the disease caused severe illness in thousands of children each year. तमाने प्रति वर्ष हजार हजार पिला माने ए डिसीज द्वारा माने अफेक्ट होतले बिफोर द वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955. एटी मन रखिबो वैक्सीन टा इंट्रोड्यूस हितला केबे 1955 रे. थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द वैक्सीन द नंबर ऑफ केसेस हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द वैक्सीन एबे द नंबर ऑफ केसेस हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. At present, most of the world has been polio free. So this present essay deals with the development of polio vaccine and its direct profit to mankind. तामने हमें जो टॉपिक टा पढ़िया पे जाउचे ए प्रेजेंट टॉपिक टा deals with the development of polio vaccine and its direct profit to mankind. ए टॉपिक टा को स्टार्ट करिया पूर्वरु ए टॉपिक रो जे ऑथर जणे नुहे दुई जण गोटे जण को ना होची बोनी ए मेबरी ओकनेक आ जण को ना होची लिंडा मॉर्गनस्टेइन जणे एडिटर. सो ए टॉपिक टा स्टार्ट करिया पूर्वरु प्रथमे बुझी जिबा जे पोलियो एग्जैक्टली कोन. सो अबाउट पोलियो फर्स्ट बुझिबा. Poliomyelitis or polio is an acute viral infectious disease that spreads from one person to another via fecal or oral route. It's a very serious disease which can lead to paralysis or even death. तामाने poliomyelitis जोटा कि पोलियो भाइरस रो नेम जोटा तो poliomyelitis और पोलियो जी की गोटे acute माने प्रखर viral infectious disease that spreads from one person to another जो कि गोटे पर्सन लो आ गोटे पर्सन को एटा स्प्रेड करता है जेहेतु एटा गोटे भाइरल भूताणु जनित इन्फेक्टियस जदि संक्रमित रोग तो गोटे पर्सन लो आ गोटे पर्सन को एटा स्प्रेड करता है केमती ना भाया फेकल और ओरल रूट. तो फेकल रूट माने हमें फेकल कहले जो गोटे हमें स्टूल पास करू माने मल द्वार एंड ओरल रूट माने जानिचे मुख द्वार. तो मल मुख द्वार दे ए भाइरस टा कोन करे माने ए हम बॉडी को एंट्री करे. इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज व्हिच कैन लीड टू पैरालिसिस और इवन डेथ. मु आगुरु कहि सारिछि ये थिला गोटे बहुत सीरियस डिजीज कारण ये डिजीज रे जने अफेक्ट होवा परे इधर से पेशेंट को पैरालिसिस हो जाए कि मतलब डेथ हो जाए. It is a contagious and can be spread by coming in contact with infected faces or through droplets traveling through the air, in food or in water. तो एटा होची गोटे कंटाजियस बा संक्रमण जनित रोग एंड कैन बी स्प्रेड बाय कमिंग इन कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड फेसेस. तो इन्फेक्टेड फेसेस माने संक्रमित मल और थ्रू ड्रॉपलेट्स माने संक्रमित जलकणा ट्रैवलिंग थ्रू द एयर, इन फूड और इन वाटर. ता माने ए जो पोलियो भाइरस एटा होची गोटे माने संक्रामक भाइरस एवं एटा कहा कांटेक्ट रे आसिले ना संक्रमित मल किबा संक्रमित जलकणा कांटेक्ट रे आसिले हला एटा स्प्रेड करि थाए. एवं एयर ई जो भाइरस रो कैरियर किए ए भाइरस रो कैरियर होची कि ना एयर, फूड और वाटर. ता माने दिस भाइरस travels through the air, in food or in water. एबे पोलियो अटैक रे only symptom कौन. Most patients are either asymptomatic or they experience flu-like symptoms like headache, nausea, vomiting and fever. Whether patients are symptomatic or not, people at this stage can pass the disease on to others. तमाने पोलियोर अधिकांश जो माने पोलियो द्वारा अफेक्ट होती से माने असिम्टोमेटिक तांका भीतर कौन लक्षण देखा जाए नहीं किंतु
जो किछि माने केस रे सिम्पटम देखा जाए से माने फ्लू लाइक सिम्पटम एक्सपीरियंस करती लाइक हेडेक नसिया वोमिटिंग एंड फीवर तो whether a patient are symptomatic or not but people at this stage can pass the disease on to other तो माने गोटे लोक पाखरे से लक्षण थाउ कि से लक्षण विहीन हेई थाउ किंतु थरे जदि से भाइरस द्वारा अफेक्ट से हेई थाए तबे से डेफिनेटली से भाइरस टाकू पर्सन टू पर्सन से कोन करियो पास करिवो एबे जिबा टाइप्स ऑफ पोलियो पोलियो केते प्रकार द टू फॉर्म्स ऑफ पोलियो आर स्पाइनल एंड बल्बार the spinal form affects the limbs and the bulbar form affects the lungs so that the patient cannot breathe both the forms of polio have common symptoms like muscle pain stiff neck and back and possible paralysis ta mane polio ro कहले दुईटा फॉर्म गोटे फॉर्म होची स्पाइनल फॉर्म आ गोटे होची बल्बार फॉर्म तो स्पाइनल फॉर्म टा कोन करे लिम्स को अफेक्ट करे एवं बल्बार फॉर्म टा कोन करे हम लंग्स को अफेक्ट करे सो दैट द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ बोथ फॉर्म ए पोलियो दुई जगह फॉर्म रे आई मीन स्पाइनल और बल्बार फॉर्म रो सिम्पटम होची सेम कौन से सिम्पटम ना गोटे होची मसल पेन स्टिफ नेक एंड बैक एंड पॉसिबल पैरालिसिस its paralytic form which is more dangerous as there is no treatment for the disease and in its worst attack the virus reaches the brain and spinal cord there it multiplies and destroys the nerve tissue so that means kon kahili na its paralytic form जोटा कि सबुठारु डेंजरस काहे कि ना ए फॉर्म पई कोनसी ट्रीटमेंट नाही एवं ए पैरालिटिक फॉर्मटा होची पोलियोर वर्स्ट अटैक तो वर्स्ट अटैक केतेबेले हुए ना जेतेबेले द भाइरस रिचेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जेतेबेले भाइरसटा जेंकि तार ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रे पहुंची जाए सेतेबेले ताकू वर्स्ट अटैक कुहा जाए तो जोडी पहुंची के से कोन करे ना देयर इट मल्टीप्लाइज इट्स नंबर एंड डिस्ट्रॉयज द नर्व टिश्यू ता नंबर को मल्टीप्लाई करे एवं नर्व टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दिए आफ्टर ए सीवियर अटैक ऑफ पोलियो इन पैरालिटिक फॉर्म देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इटसेल्फ but symptoms such as muscular paralysis can be helped with physical therapy what I mean is simply this जे after a severe attack of polio in its paralytic form जण paralytic form रे severe attack हवा polio द्वारा हवा द्वारा there is no treatment for the disease तो थरे severe form द्वारा attack हवा परे से disease पई कोनोसी treatment नाही but symptoms such as muscular paralysis can be helped with physical therapy हाँ गोटे प्रकार paralysis जोटा कि हमें muscular paralysis हमें कहू तार जो symptom यदि देखा जाए ताले symptoms such as muscular paralysis can be treated out with physical therapy द्वारा हमें muscular paralysis को treat करि परिबा the rate of recovery through this therapy varies from person to person किंतु ए थेरापी द्वारा जो रिकवरी रेट टा पर्सन टू पर्सन वैरी करे एंड 10% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल डेवलप सिम्पटम्स एंड 1% डेवलप द पैरालिटिक फॉर्म ऑफ पोलियो ता माने जदी पोलियो द्वारा अफेक्ट हेतिबा जेते लोक सेमान भितरु ओनली 10% को केस रे सेमाने सिम्पटम शो करंती आउ 1% जो माने कि पैरालिटिक फॉर्म ऑफ पोलियो रे सफर होइतांती एबे जिबा ए पोलियो द्वारा अमेरिका केमते ट्रबल्ड हेतिला A troubled America due to polio आम तो जानिचे हमर कोविड-19 लो आजी मध्य आमे दैरात्म फेस करूचे आजी मध्य कोविड-19 हैज नॉट गॉन येट तो ठीक सेमती वंस ऑफ ए टाइम पोलियो ट्रबल्ड अमेरिका अ लॉट तो केमती ट्रबल करथिला से विषय बुझिबा इन 1921 द सडन स्टार्ट एंड वाइड स्प्रेड ऑफ पोलियो ट्रबल्ड अमेरिका अ लॉट तो 1921 रे सडनली अमेरिका रे पोलियो वाइड स्प्रेड माने आउटब्रेक करथिला एवं वाइड स्प्रेड हो जाइथिला चारियाडे जाफर अमेरिका ग्रेटली ट्रबल हेतिला although polio never devastated large number of the population like the plague and influenza it was a frightening and highly contagious disease that attacked both the poor and the rich and arose in terrifying outbreak which seemed impossible to stop in spite of advances in medicine children were most vulnerable to the disease तामाने although polio never devastated large number of the population like the plague and influenza जदियो आ पूर्वरु जेतक पैंडेमिक आसीथिला तो से पैंडेमिक कोन सब आसीथिला इन्फ्लुएंजा बोली गोटे पैंडेमिक आसीथिला प्लेग आसीथिला एथिरे माने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एथिरे कोन होतले डेथ माने मृत्युवरण करथिले किंतु पोलियो से टाइप रो नथिला बट इट वाज फ्राइटेनिंग एंड हाईली कंटाजियस डिजीज किंतु एटा गोटे फ्राइटेनिंग और हाईली कंटाजियस डिजीज दैट अटैक बोथ द पुअर एंड द रिच एंड एरोज इन टेरिफाइंग आउटब्रेक्स एवं अमेरिका रे जो टाइप रे आउटब्रेक करथिला गोटे टेरिफाइंग आउटब्रेक करथिला व्हिच सीम्ड इम्पॉसिबल टू स्टॉप इन स्पाइट ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन अमेरिका भले जने सुपर पावर
माने मेडिसिन फील्ड रे मेडिकल साइंस रे एते एडवांस करी कि भी से पोलियो आगे हार मानि थिला। चिल्ड्रेन वर मोस्ट वल्नरेबल टू द डिजीज एवं ए डिजीज रे सबुठु अधिक आक्रांत होतले मोस्ट वल्नरेबल सबुठु अधिक आक्रांत होतले को माने छोटो पिला माने। Offsetting posters of children on crutches or in iron lungs and other such mechanical aids became common in the early 1950s. Parents throughout America panicked due to unavailability of any vaccine. That means 1921 ले पोलियो आउटब्रेक करथिला बट 1950 बेलकू पोलियोटा एमती डेभास्टेटिंग आउटब्रेक करथिला जे अमेरिका रे जुआडे आमे देखिबा सियाडे कांथ बाडरे ऑफसेटिंग पोस्टर्स ऑफ चिल्ड्रेन ऑन क्रचेस माने क्रचेस माने आश्रा बाड़ी रे कारण पोलियो जेहेतु पैरालिसिस कर दोथला पिला मानकू तो अनेक गुडे पिला मानक फोटो अमेरिकार कांथ बाड़े लगिथिला जोथरे से माने आश्रा बाड़ी रे किबा आयरन लंग्स एंड अदर सच मेकानिकल एड्स रे बंचिथिले। ओके एंड पेरेंट्स थ्रू आउट अमेरिका पैनिक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी वैक्सीन जेहेतु छोटो पिला माने एथिरे अधिक अफेक्ट होतले तेणु ऑल थ्रू आउट अमेरिका पेरेंट्स माने छानिया पसि जाइथिला तांग भितरे जेहेतु सेतले वैक्सीन बाहरी पाइ नथिला। एटी गोटे कथा मन रखिबा जे 1921 ले पोलियो आउटब्रेक हैला बट 1950 पर्यंत अमेरिका वैक्सीन बाहर करि पाइ नथिला। मेडिकल साइंस रे से एते डेवलप कला परे भी मध्य पोलियो पई से वैक्सीन बाहर करि पारि नथिला। दैट्स व्हाई द पेरेंट्स थ्रू आउट अमेरिका पैनिक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी वैक्सीन। They stopped sending their kids to school and other public places so as to protect them. They feared that their children would contract the paralytic form of polio. Everybody questioned the unavailability of vaccines despite the medical advancement. So they stopped sending their kids to school and other public places so as to protect them. That means तो पेरेंट्स माने एमिति भाबरे तांको छानिया पसि जाइथिला जे सेमानको पिला मानको स्कूल को छाडु नथिले काहे कि ना तांको प्रोटेक्ट करिया पई। दे फियर दैट द चिल्ड्रन वुड कंट्रैक्ट द पैरालिटिक फॉर्म ऑफ पोलियो। सेमानको डर लागुला जे काले सेमानको पिला माने पोलियो रो पैरालिटिक फॉर्म रे शिकार हेबेनी तो। एवरीबॉडी क्वेश्चन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन वैक्सीन्स डेस्पाइट मेडिकल एडवांसमेंट जे मेडिकल एते एडवांस कला परे भी गोटे वैक्सीन बाहर करी माने ही पारु नाही तो समस्त एवरीबॉडी क्वेश्चन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स डेस्पाइट द मेडिकल एडवांसमेंट। एबे जिबा अबाउट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। बर्तमान एमती जड़े यंग मैन विषय पढ़ा जो जड़े यंग मैन जे कि निजे पोलियो द्वारा अफेक्ट होते दुटी लेग पैरालाइज होता बट तांकरी जो आज वर्ल्ड पोलियो निर्मूल हो पारा तो पोलियो एलिमिनेट हो पारा यही पर्सन जो ना है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट विषय टी बुझा। फ्रैंकलिन वाज अ यंग पॉलिटिशियन। In the summer of 1921, he was holidaying with his family at his Campobello estate. After fighting a local forest fire, he was exhausted, so he took a cold swim for relief. तमाने फ्रैंकलिन जने young politician थिला। In the summer of 1921, जेतेबळे अमेरिकार पोलियो रो आउटब्रेक टा पीक रे थिला कारण 1921 ले अमेरिका रे डेवास्टेटिंग माने रेट रे पोलियो आउटब्रेक करिथिला एंड इन द समर ऑफ 1921 ही वाज हॉलिडेइंग विथ हिज फैमिली एट कैंपोबेलो एस्टेट। ता माने तांकर गोटे गेस्ट हाउस थिला जोटा कि गोटे फॉरेस्ट को लागी कि थिला तो सेही गेस्ट हाउस ना हला कैंपोबेलो एस्टेट। से तांको फैमिली सहित सेठी हॉलिडे स्पेंड करथिले एंड आफ्टर फाइटिंग ए लोकल फॉरेस्ट फायर ड्यू टू सम रीजन से फॉरेस्ट को टिके निया लगी जाइथिला एवं से नियाटा को से लिभेबारे अन्य मानक सहित मिसिक से नियाटा को लिभेइथिले जा फल रे आफ्टर फाइटिंग ए लोकल फॉरेस्ट फायर ही वाज एग्जॉस्टेड सो ही टुक अ कोल्ड स्विम फॉर रिलीफ। तेणु निजको रिलीफ करबा पई से गोटे कोल्ड स्विम नैथिले। Then he launched in his wet swimsuit and went to bed feeling as if he had contracted a cold. In a few days he found out that he had polio. And he was amongst those 1% unlucky people as his legs were permanently paralyzed. तमने से जो कोल्ड स्विम परे से वेट स्विम सूट रे टिके विश्राम नौतले एवं ताको देह भल लागलानी वेंट टू बेड फीलिंग एज इफ ही हैड कंट्रैक्टेड कोल्ड। तेणु से बेड को गले ताको लागला सत्य मते ठंडा हिची या फील करी से बेड को गले। इन अ फ्यू डेज ही फाउंड आउट दैट ही हैड पोलियो किंतु किछि दिन भितरे जणा पड़ला जे ताको पोलियो हिची एंड सबुठु बड़ कथा है ही वाज एमंगस्ट दोज 1% अनलकी पीपल आज हिज लेग्स वेयर परमानेंटली पैरालाइज। ता माने मु आगुरु कहिछि जे 10% पीपल अफेक्टेड पेशेंट को केस रे सिम्पटम देखा जाए 1% को केस रे माने पैरालिटिक फॉर्म रे सफर होंती। तेणु ए फ्रैंकलिन से 1% अनलकी पीपल भीतर जणे थिले जहा कि ताकर हिज लेग्स वेयर परमानेंटली पैरालाइज्ड।
एबे जीवा हिज फाइट विथ पोलियो से तो पैरालिसिस हो गले ओके तो ये बहुत बहुत किसी लाइफ में आमको शिखा मिले बिकज ये गोटे ग्रेट मोटिवेशन आम लाइफ रे हो पार जदि माने जीवन में किसी करने चाहूबा कारण दुईटा लेग पैरालिसिस हो गला तथापि से पोलियो आगे हार मान नथिले एंड सबुठ बड़ कथा ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अमेरिकार प्रेसिडेंट होते ओके सो केमती हेले सेटा बुझीबा सो ही वाज डिटरमिन्ड दैट ही विल नॉट लेट हिज इलनेस डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर तो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट डिटरमिन थिले जे कोनोसी भी उपाय रे तांकर ई इलनेस तांको पॉलिटिकल कैरियर को डिस्ट्रॉय करबा को देबे नाही He continued his political career and became the president of the United States. एवं से तांको political career को continue करथिले एवं finally से United States रो president हेतिले and he was elected for more than 2 terms for his outstanding administration. एवं तांकर outstanding administration पाई से दुई थर अमेरिकार प्रेसिडेंट हेतिले. During his illustrious political career, he spearheaded the fight against polio. Raised public awareness of this deadly disease and also promoted and funded research to develop vaccine against the disease. तमाने ई तांकर ई जो ब्राइट कैरियर जो पॉलिटिकल कैरियर भितरे से तांकर जो फाइट अगेंस्ट पोलियो को तीव्र तीव्र कर देथिले एवं पब्लिक अवेयरनेस ई जो डिजीज को नै ई डेडली डिजीज को नै पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाइथिले एवं ता सहित जे फंडिंग करथिले एवं फंडिंग करथिले रिसर्च पई प्रमोट करथिले जे केमती गोटे वैक्सीन सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप हेई परिबो सेति पई से रिसर्च पई फंडिंग करथिले रिसर्च को प्रमोट करथिले. He helped found an organization that is March of Dimes, a grassroots organization for the purpose of combating polio. This organization helped researchers develop a vaccine for polio. तो से मध्य गोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रतिष्ठा करथिले जार ना होची मार्च ऑफ डाइम्स. एटा होची गोटे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जा ए ऑर्गेनाइजेशन लो माने सेटिंग करिवार बा फाउंड करिवार ताकर पर्पस थिला टू कम्बाट पोलियो को दमन करिवा. This organization helped researcher develop a vaccine for polio एवं ए ऑर्गेनाइजेशन ही रिसर्चर मानकु हेल्प करथिले जे केमती पोलियो पई वैक्सीन तयारी हेई पारिबो. The organization decided to enlist the service of a respected researcher who was certain he could find a safe vaccination. The organization एबे बुझिबा early attempts at developing a polio vaccine. तो polio vaccine develop केबे आरंभ होइतिला एवं early attempt रे कोन सक्सेस मिलिथिला ना मिलि नथिला ता विषय बुझिबा. The vaccine development of polio had begun in the 90s. But the early attempts at the development of polio vaccine failed. तामने एठी हमें गोटे कथा बुझिबा जे अमेरिका रे पोलियो आउटब्रेक कला 1921 ले बट 1990s रु वैक्सीन पोलियो अदर कंट्री आउटब्रेक करथिला अमेरिका रे आउटब्रेक कर नथिला बट 90s रे वैक्सीन डेवलपमेंट काम आरंभ हो जाइतिला किंतु जेतक इयरली अटेम्प्ट्स निया जाइतिला वैक्सीन डेवलप करिवा पई से गुडा को फेल हेतिला सेते कोनोसी सक्सेस मिलि नथिला. It was because researchers did not know that there was more than one virus involved in causing polio. But it was later they came to know that polio was caused by 3 strains of stable virus that are a part of the enterovirus family. I mean virus that causes gastrointestinal illness which had RNA as their genetic material. किंतु एइथिपई से माने वैक्सीन डेवलप करि पाइ नथिले. इट वाज बिकॉज रिसर्चर डिड नॉट नो दैट देयर वाज मोर देन वन वायरस इन्वॉल्वड इन कॉजिंग पोलियो. ता माने सेते बेले रिसर्च माने जानि पाइ नथिले जे पोलियो एक रु अधिक वायरस द्वारा हेइ थाए बोली से माने जानि नथिले. से माने भाबुतले पोलियो गोटिए वायरस द्वारा हुए सेही अनुसार से माने रिसर्च जारी रखिथिले. सेहिपई ताको वैक्सीन से माने सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप करि पाइ नथिले. बट इट वाज लेटर दे केम टू नो दैट polio was caused by 3 strains of stable virus. परे परे जब रिसर्च पुणी कंटिन्यू करला सेते बेले सेते जणे जानियो को मिलिला जे पोलियो गोटी वायरस नुहे एटा 3 strains of stable virus द्वारा हेइ थाए दैट आर ए पार्ट ऑफ ए एंटेरोवायरस फैमिली एवं ए जो वायरस टा एंटेरोवायरस फैमिली को बिलोंग करथाय पर से वायरस फैमिली रो पार्ट. तबे एंटेरोवायरस फैमिली कौन ना एंटेरोवायरस फैमिली कहले द वायरस दैट कॉजेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस. त माने जो वायरस हम भीतर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस करे तो सेही फैमिली को एटा बिलोंग करथला व्हिच हैड आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल.
These virus can remain infectious for long period of time in water and foods. ସବୁଠାରୁ important କଥା ହେଲା ଏ virus can remain infectious for long period of time in water and foods. ଏଠି ଏବେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଯେ ପୋଲିଓକୁ ନେଇ ଆଇରୋନିକାଲି କ'ଣ ओके आ पैराडॉक्सिकली कौन तो आइरोनिकली माने कौन जे पोलियो को नहीं कौन आइरोनिकली स्टेटमेंट कौन दिया जाए तो आइरोनिकली कौन बुझिबा पई आगे बुझिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइरोनिकली सो आइरोनिकली इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग दैट अ सिचुएशन हैज डेवलप्ड इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड समटाइम्स अ ह्यूमरस वे तो आइरोनिकली कहिले तमे बुझिबा जो सिचुएशन हैज डेवलप्ड इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड ह्यूमरस वे ओके त माने किछि गो माने सबुजाक नेगेटिव थिबो सबुजाक नेगेटिव थिबो हेले रिजल्ट मिलुथबो पॉजिटिव जोटी कि नेगेटिव हबाटा 100% तो ता माने एक्चुअली सिचुएशन सराउंडिंग सब कुछ नेगेटिव थिबो जोटी हमें रिजल्ट एक्सपेक्ट करबा कोन नेगेटिव ऑब्वियसली किंतु सब कुछ नेगेटिव थाई जदि रिजल्ट पॉजिटिव मिलुची तो से प्रकार सिचुएशन को आइरोनिकली कहा जाए किंतु जदि सबुजाक पॉजिटिव थाए है सबुजाक पॉजिटिव थाई जदि रिजल्ट नेगेटिव हो जाए तो ताको कहा जाए पैराडॉक्सिकली ता माने बुझबा पोलियो को नहीं आइरोनिकली कौन माने आइरोनिक व्हाट इज दैट आइरोनिक फैक्ट अबाउट पोलियो एवं पैराडॉक्सिकल फैक्ट कौन बुझिबा बिफोर 1900 देयर वर पुअर सैनिटेशन कंडीशन primitive efforts at sewage and water treatment so babies were frequently exposed to polio virus at that time immunity was acquired through breastfeeding तमारे 1900 पूर्वरु there were poor sanitation तो चारियाडे परिमल व्यवस्था पूरा दयनीय थिला प्रिमिटिव एफर्ट्स एट स्वेज एंड वाटर ट्रीटमेंट तो वाटर ट्रीटमेंट आउ स्वेज माने जो वाटर ट्रीटमेंट स्वेज मध्य बहुत माने ओल्ड मेथड रे से जो ओल्ड मेथड को फॉलो करा जाउथला सो बेबीज वर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू पोलियो वायरस तो छोटो छोटो पिला माने पोलियो वायरस द्वारा फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होतले किंतु एट दैट टाइम इम्यूनिटी वाज एक्वायर्ड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग तो सेते बेले इम्यूनिटीटा ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा एक्वायर करा जाउथला These infants didn't contract the disease because their mothers and antibodies were passed on to them through breastfeeding. किंतु देखो सेते बेले सराउंडिंग पूरा बैड थिला ता माने वाटर ट्रीटमेंट बहुत पुअर थिला स्वेज सिस्टम आई मीन सैनिटेशन ए सब बहुत पुअर थिला ता माने जोटा कि पोलियो पाई गोटे फेवरेबल कंडीशन थिला किंतु पिला माने इनफेक्ट माने अफेक्ट होतले किंतु माने पोलियो द्वारा पिला माने संक्रमित होनुथिले काहेकि ना बिकॉज देयर मदर्स एंटीबॉडीज वर पास्ड ऑन टू देम थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग द बेबीज देन डेवलप देयर ओन एंटीबॉडीज टू द वायरस तो तापरे पिला माने निजर भीतर निजर एंटीबॉडी डेवलप होतला जा फल से माने वायरस सहित फाइट करि पारुथले एवं तांको पोलियो होनुथिला तो हमें बुझी गले तले फैक्ट बुझी गले जे आइरोनिकली कोन ने जे एनवायरनमेंट बहुत पुअर थिला सैनिटेशन वाटर ट्रीटमेंट स्वेज ट्रीटमेंट ए सब किछि पुअर थिला जोटा कि पोलियो पई गोटे कंडक्टिव एनवायरनमेंट थिला पिला माने भी सेतरे पोलियो द्वारा मध्य माने अफेक्ट होउथिले किंतु से मानको पोलियो संक्रमित होउनथिला काहे कि ना से मानको मदर को एंटीबॉडी से मानको पाखक पास करला त माने एते गुडी नेगेटिव हैला परे भी रिजल्ट थिला कोन पॉजिटिव पिला मानको पोलियो होनथिला ए बुझिया पैराडॉक्सिकली माने कोन इट मींस इन अ स्ट्रेंज वे ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड त माने सबुआडे पॉजिटिव थिबो हेले रिजल्ट थिबो कोन नेगेटिव तो देखिबा तो पोलियो को नै पैराडॉक्सिकली कोन व्हेन सैनिटेशन इंप्रूव्ड babies were no longer exposed to polio but they were affected in later childhood and adulthood तो ये पैराडॉक्सिकली एटा हैला जे सैनिटेशन इंप्रूव करी गला तो बेबी माने छोट छोट पिला माने पोलियो द्वारा एक्सपोज हेले नि कारण जेहेतु सैनिटेशन इंप्रूव कर दिया गला वाटर ट्रीटमेंट स्वेज ट्रीटमेंट सब को इंप्रूव कर दिया गला जोटा कि पोलियो पई आ एनवायरनमेंट पोलियो पई आ कंडक्टिव हैला नाही तो बेबी माने पोलियो द्वारा एक्सपोज हेले नाही किंतु दे वर अफेक्टेड इन लेटर चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड किंतु से पिला माने जतबे बड़ होई गले जतबे लेटर चाइल्डहुड एवं एडल्टहुड एज रे पहुंची गले से माने पोलियो द्वारा अफेक्ट हेले they were at risk to contract polio when they were exposed to open surrounding as they didn't develop their own antibodies to the virus कारण से माने आ निजर एंटीबॉडी डेवलप करि पार नथिले किंतु पूर्वरु जोरा के आइरोनिकली कहले सेते बेले सब कुछ खराब थिला
किंतु सेमानकर एंटीबॉडी सेमाने डेवलप करि पाउथले कारण सेमानक मदरकर एंटीबॉडी सेमानक पाखु पास करूथला जा फଳରେ सेमाने निजे निजरो एंटीबॉडी डेवलप करथले अगेंस्ट द डिजीज किंतु जेतबेले सेमाने बड़ होई गले सेतबेले सैनिटेशन प्रॉब्लम सब इंप्रूव कर दिया गला बट I mean they were at risk to contract polio when they are exposed to open surroundings as they didn't develop their own antibodies to the virus. एबे जिबा प्रकृतरे जे वैक्सीन किए प्रथमे डेवलप करथिले द फर्स्ट टू डेवलप अ सक्सेसफुल वैक्सीन सो एमती फर्दर रिसर्च कंटिन्यूड लेटर इट वाज डॉक्टर जोनास साक who was an American medical researcher and virologist developed the first effective polio vaccine. तो एमती रिसर्च कंटिन्यू कला बट फाइनाली डॉक्टर जोनास साक जे कि जने अमेरिकार मेडिकल रिसर्चर एवं जने माने भाइरस को स्टडी करूथबा जने पर्सन जने वायरोलॉजिस्ट डेवलप द फर्स्ट इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन तो प्रथम इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन डेवलप करथिले के डॉक्टर जोनास साक ही स्टार्टेड हिज मेडिकल रिसर्च करियर स्टडीइंग इम्यूनोलॉजी इन 1947 while at the University of Pittsburgh he began his research on polio virus तमे 1947 रे जेतेबेले से पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी थिले सेतेबेले से पोलियो भाइरस ऊपर रिसर्च करथिले किंतु से ताको मेडिकल रिसर्च करियर स्टार्ट करथिले कौन इम्यूनोलॉजी स्टडी करी In 1952, he became the first person to develop a successful polio vaccine by using a mixture of 3 types of virus grown in monkey kidney culture. He used a chemical called formalin that inactivated the whole virus. I mean, in 1952 रे से माने वर्ल्ड रो फर्स्ट पर्सन जे कि गोटे सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन यूज कर माने डेवलप करथिले केमिति ना बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वायरस ओला 3 प्रकार वायरस रो मिक्सचर रे से वैक्सीन टा डेवलप करथिले से वायरस टा कोठी ग्रो करथिला ना ग्रोन इन मंकी किडनी कल्चर मंकी रो किडनी को कल्चर करी से 3 प्रकार वायरस को ग्रो करा जायथिला एंड ही यूज्ड ए केमिकल एवं से गोटे केमिकल यूज करथिले जाके कहति फॉर्मालिन जोडा कि सबु जाको वायरस को कोन देथिला इनएक्टिवेटेड कर देथिला ई प्रोसेस रे से वैक्सीन डेवलप करथिले एबे about sac vaccine से तांको वैक्सीन विषय में कथन आसीबा द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ sac vaccine were made in America and Canada in 1954 टू टेस्ट द वैक्सीन तो प्रथमे वैक्सीन को तो टेस्ट करा जीवो ना तो सेति पई क्लिनिकल जो sac vaccine रो क्लिनिकल ट्रायल आरंभ हेतिला केबे 1954 रे को कंट्री रे हेतिला अमेरिका और कनाडा रे हेतिला एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एवं ए जो क्लिनिकल ट्रायल गोटे ग्रेट सक्सेस प्रोड्यूस करथिला केसेस ऑफ पोलियो रिड्यूस्ड स्पेक्टाकुलरली इन द वैक्सीनेटेड टेस्ट ग्रुप जो वैक्सीनेटेड टेस्ट ग्रुप जो मान को वैक्सीन दिया जाइतिला जो पोलियो पेशेंट मान को वैक्सीन दिया जाइतिला माने ट्रायल बेसिस रे जोना पड़थिला जे सेमानो केस रे केसेस ऑफ पोलियो रिड्यूस्ड स्पेक्टाकुलरली सेमानो केस रे पोलियो बहुत मात्रा रे कमी जाइतिला After a massive test and a proven successful result, the polio vaccine got the permission of the government to be used in the country in 1955. So finally, जेतेबेले गोटे massive test परे एवं successful result मिलला परे, finally the vaccine got the permission of the government to be used in the country in 1955. 1955 रे गवर्नमेंट रो परमिशन पाइथिला डिस्ट्रीब्यूट होवा पई से वैक्सीन ऑल थ्रू आउट द कंट्री. But after a few days there was a problem noticed with the sac vaccine किंतु ई वैक्सीन परमिशन पाइबार किछि दिन भितरे गोटे प्रॉब्लम नोटिस करा गला कौन से प्रॉब्लम ना द वैक्सीन गेव राइज टू 260 केसेस ऑफ पोलियोमाइलिटिस दैट इंक्लूडेड 10 डेथ तो जो ट्रायल पाई जो वैक्सीन जो पेशेंट मान को दिया जाइथिला से मान को भितर 260 जन को केस रे ए वैक्सीन कोन कला ना पोलियोमाइलिटिस जो वायरस से वायरस को बढ़ाई देला जा फल से 260 केसेस भितर 10 जनकर डेथ हो गला. प्रॉब्लम कौन थिला ना द प्रॉब्लम वाज दैट देयर हैड बीन इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ सम वायरस पार्टिकल प्रॉब्लम थिला जे किछि वायरस पार्टिकल को इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन जुगु एई प्रॉब्लम टा हेतिला. सो द प्रॉब्लम वाज करेक्टेड सून एवं खूब शीघ्र प्रॉब्लम टाको करेक्ट कर दिया गला एंड सिंस इट्स करेक्शन द वैक्सीन हैज बीन वेरी इफेक्टिव विथ 70 to 90% प्रोटेक्शन रेट एवं जेबेठू करेक्शन हला सेबेठारु एटा 70 to 90% प्रोटेक्शन रेट रे एटा बहुत इफेक्टिव हेई परिला. द sac vaccine was given to children in 2 intramuscular injection at 1 month intervals
with booster dose every 5 years এবং ফাইনালি তাଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ କରେକ୍ଟ କଲା ପରେ এই ସାକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆଗଲା ନା ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଦୁଇ ମାନେ ଆଟ୍ 1 ମନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ এই ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ତା ସହିତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଗଲା এই ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏବେ ଯିବା ସାବିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସାବିନ୍ ଆଲବର୍ଟ Bryce Sabin, he was the second person to develop a vaccine. Albert Bryce Sabin was an American medical researcher. He भी मतलब जने American medical researcher. He began testing a live oral form of the vaccine in which the infectious part of the virus was inactivated. तो तांकर जो vaccine development थिला से live oral virus को नहीं vaccine करथिले. The new form of the polio vaccine was the oral form. एटा ଗୋଟେ oral form थिला and it became available for use in 1963. এবং এটা 1963 মସିହାରେ 1963 ରେ এটা available ହେଇଥିଲା। The new Sabin oral vaccine was given in 3 doses in the first 2 years of life and a booster was given when the child started to school. ता माने এই जो Sabin oral vaccine এটা ଗୋଟେ oral vaccine थिला কিন্তু Sac vaccine টা ଗୋଟେ injection vaccine थिला। तो Sabin vaccine टा was given in 3 doses in the first 2 years of life. तो ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ 3ଟା ଡୋଜ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ booster was given when the child started to school. Further booster were not given unless the patient was exposed to polio or travel to an endemic region. এবং further booster से पिला को आउ दिया जाउ नथिला in case जदि से पिला कोनोसी exposed to polio or travel to an endemic region से पोलियो संक्रमण अंचल को जदि से यात्रा करथिला सेतेबे जाई further booster दिया होतला अदरवाइज आउ further booster दिया जाउ नथिला। एबे जिबा ए जो ओरल वैक्सीन ए जो साक वैक्सीन साक वैक्सीन जो साबिन वैक्सीन तो से जो साबिन वैक्सीन था ओरल वैक्सीन तार एडवांटेज कौन डिसएडवांटेज कौन साबिन ओरल वैक्सीन हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाज वेल आरो एडवांटेज भी थिला एवं डिसएडवांटेज भी मदन थिला। द एडवांटेज वेयर इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एंड द प्रिवेंशन ऑफ री-इन्फेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आरो सबटु बड़ एडवांटेज थिला ई वैक्सीन रो को वैक्सीन लो जो साबिन ओरल वैक्सीन लो कौन ना लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी तो ये वैक्सीन नेला परे जो इम्यूनिटी एक्यूर करथला से पिला एटा लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एक्यूर करथला एवं ता सहित इरा प्रिवेंट करथला काहाकू ना द री-इन्फेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को री-इन्फेक्शन लो एटा प्रिवेंट करथला। Another advantage was the lower cost of administering the vaccine orally as the sterile syringe and needles were not required. तो এই जो वैक्सीन जेहेतु एटा ओरल वैक्सीन तो एथि सिरिंज आवश्यक पड़ नथिला तो जेहेतु स्टेराइल सिरिंज आर नॉट रिक्वायर्ड निडल्स वर नॉट रिक्वायर्ड से लेस एक्सपेंसिव थिला तो ये आउ गोटे एडवांटेज थिला। और डिसएडवांटेज कौन ना इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेशेंट विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो सिस्टम तो जो मानकर वीक इम्यूनो सिस्टम से वैक्सीन यूज हो पार ना बिकज इट इज ए लाइव भाइरस कारण जेहेतु लाइव भाइरस एंड कैन कज डिसीज इन दिस पेशेंट एवं ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जब वैक्सीन दिज्व ताले भीतर कौन रोगटा को बढ़ईदेव तेणु it cannot be used for patient with compromised immune system because it is a live virus and can cause disease in these patients. It also cannot be used by those in close contact with immunocompromised patient because the live virus in the vaccine can be shed in the feces of those who ingest it and can possibly be transmitted to the immunocompromised patient. So कहली जे आई ऑल्सो इट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज बाय दोज इन क्लोज कंटाक्ट विथ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट तो जो माने इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट रो क्लोज कंटाक्ट थांती सेमानकु मध्य ये वैक्सीन दिया जाई पारे नाही कहीं ना एटा गोटे लाइव भाइरस तो ये लाइव भाइरस इन द वैक्सीन कैन बी सेड इन द फेसेस ऑफ दोज हु इंजेस्ट इट तामाने जो माने ई क्लोज कंटाक्ट रे अछंती इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट रो तो सेमान को जदि वैक्सीन दिया जीवो तबे सेमानकर माने फेसिज माने मल द्वारा एटा कोन हबो ना संभावना अछि कैन पॉसिबली बी ट्रांसमिटेड टू द इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट से इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट पाखु ट्रांसमिट करिवार संभावना बहुत अधिक थाए तेणु करी इटी कैन नॉट बी यूज्ड बाय दोज in close contact with the immunocompromised patient because the live virus in the vaccine can be shed in the feces of those who ingest it and can possibly be transmitted to the immunocompromised patient.
Another disadvantage of the vaccine is that those who have an enterovirus infection of the gastrointestinal tract, when taking the oral vaccine, may not develop immune response. तो आउ गोटे यार डिसएडवांटेज है जे जो माने दोज हु हैव एन एंटेरोवायरस इन्फेक्शन, जो मानकर एंटेरोवायरस इन्फेक्शन अच्छी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, व्हेन टेकिंग द ओरल वैक्सीन से माने तो ओरल वैक्सीन नहीं थांती, मे नॉट डेवलप इम्यूनो रेस्पॉन्स, से मानकर इम्यूनो रेस्पॉन्स टोटल हुए ही नहीं. नेक्स्ट the debate about the two vaccine. तो ये दुईटा वैक्सीन डिबेट कौन ना, तो डिबेट बिटवीन द सेफ्टी एंड कॉस्ट विल कंटिन्यू, बट वी आर फॉर्चुनेट टू हैव टू गुड अल्टरनेटिव. सी तो डिबेट चलिबो, कहबा लोक मानकर काम है, लोक मानक काम है कहबे, सी कहबे एटा भलो सेटा खराब, तो लोक माने तो बहुत किछि कहि पारंती, डिबेट तो चलिबो, किंतु वी आर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव टू गुड अल्टरनेटिव. जे हम माने बहुत सौभाग्यवान जे हम पाखरे दुईटी वैक्सीन अछि, दुईटी वैक्सीन अछि बोली आमे माने पोलियो द्वारा अफेक्ट हेई नाही. Both vaccines are currently in use throughout the world, and in the United States, the Sabin vaccine is used almost exclusively. जदियो all over the world ये दुईटा वैक्सीन यूज करा जाउची, किंतु यूनाइटेड स्टेट रे एक्सक्लूसिवली Sabin वैक्सीन यूज करा जाउची. In other countries, the SAC vaccine is preferred. Research continue to improve this vaccine, एवं रिसर्च जारी रहिची एक वैक्सीन को इम्प्रूव करबा पई. The latest research in the development of polio vaccine. एबे बुझिबा जे पोलियो वैक्सीन नै एबे कोन रिसर्च चली छी. Now research is going on to produce vaccine to induce higher level of antibody formation. एबे रिसर्च चली छी जे एमिति एको वैक्सीन डेवलप करिया पई जोटा कि हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करि परिबो. The scientists are now attempting genetic alteration of the polio virus. तो साइंटिस्ट माने एबे अटेम्प्ट करू माने ट्राई करूचंती जे पोलियो भाइरस रो गुणसूत्र परिवर्तन करिया पई. दे आर यूजिंग एस्केरिचिया कोली एज ए होस्ट फॉर द बैक्टीरियल जीन क्लोनिंग. से माने एस्केरिचिया कोली को होस्ट भाबरे यूज करिकी जो बैक्टीरियल जीन क्लोनिंग करिकी वैक्सीन डेवलप करिया पई चेष्टा करूचंती. ये थिला पिला माने डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन ए जो टॉपिक रो सम एंड सब्सटेंसेस जहाँ को बेस करी एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ी थाए. तो ये जो मेथड रे मु डिस्कशन कली टॉपिक टाको, ए मेथड को कहा जाए पैराफ्रेजिंग मेथड. एवं ए मेथड रे जदि आमे ए टॉपिक को थरे दी थरो आमे भलो भाबरे सुनिबा, तबे डेफिनेटली हमको क्वेश्चन आंसर पई एते प्रॉब्लम हबो नाही. आमे जे कोनोसी क्वेश्चन को सुंदर भाबरे आमे आंसर लिखि परिबा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन. पुणी देखा हबो आउ गोटे टॉपिक सहित. जय जगन्नाथ.